if we talk about the last class, we have seen the matched filter receiver, and before that we were studying about PAM, right? And more generally, we were studying about Emery PAM, right? So now today we are going to discuss about Emery QAM, that is called QAM, quadrature amplitude modulation. So you can write down the heading quadrature amplitude modulation. And we will discuss about Emery, right? Emery means the general quadrature amplitude modulation, in which we can use to encode the data into M levels, right? So Emery quadrature amplitude modulation. So before discussing Emery quadrature amplitude modulation, first we should understand that what is the difference and what is the importance of quadrature modulation. So if we talk about a simple modulation scheme, in that modulation scheme, normally we are having a pulse or we are having a waveform of some certain frequency, FC, which can be named as the carrier frequency, right? Which can be named as the carrier frequency. Now, if we want to make our data rate double, right? If we want to make our data rate double, listen it carefully. If we want to make, if we want to increase, or if we want to make the data rate double, so what we have to do? We have to double the carrier frequency, right? Or we have to double the bandwidth. Sorry, we have to double the bandwidth, right? So if you want to make the data rate double, we have to double the bandwidth. This is the only option, right? Because we know that the FCs, we are using a certain frequency for the transmission of fixed data. Now, if we want to send more data, right? Definitely, we need more frequencies. Okay. So, for example, you can say that we are for sending data one, we are using this amount of bandwidth. Then for sending data 2, we definitely need some extra bandwidth. Otherwise, we have to wait for the time that this data should travel from transmitter to receiver from this bandwidth, right? Ultimately, whenever this bandwidth will be free, then only we can transmit the data to, right? If you want to parallelly send the data to, it will not be possible because the data 1 is already occupied in this band. So you need some extra bandwidth, right? So ultimately, we can say that if we want to double the data rate, then we have to double the bandwidth. This is a simple relationship. But if we modulate our frequencies, if we modulate our data with the frequencies, right? For example, this is FC1 and this is FC2. And if both the frequencies is orthogonal in nature, right? Orthogonal in nature. So what will happen? So what we can do, we can modulate the data 1 with the frequency FC1 and we can modulate the data 2 with the frequency FC2, and we can send these both the data into the same bandwidth. Because both the frequencies are orthogonal in nature, then they will not get interfere. What I mean that if the frequencies are orthogonal, actually we can say that if we are using the carrier 1, if we are using the carrier 1 to modulate data 1, right, then we can use the 90-degree phase shift version, 90-degree phase shift version
of carrier 1, it can be used to modulate data number 2, right? And because the phase shift is 90 degree in between these two carrier, then we can say that these two carrier can be orthogonal in nature, right? These two carrier can be orthogonal in nature. And if these two carriers are sorry, if these two carriers are orthogonal in nature, it means that they will not get interfere and we can send both the data through that single available bandwidth. So with if we are doing so, then without increasing the bandwidth, we can double the data rate. We can double the data rate. This is important, right? We can double the data rate. I hope you got the point, right? So the concept is what? The concept is that basically if we are using a simple modulation scheme, then it is very simple that if you want to increase or if you want to double the data rate, we have to double the bandwidth, or in general if you want to increase the data rate, then we have to increase the requirement of bandwidth, which is certainly cannot be preferred in the practical communication. Why? Because we know that the bandwidth is always limited with us, right? But if we are using such kind of phenomena where we are using two carriers to modulate the data and both the carriers are having 90-degree phase shift between them, then we can say that both the carriers are orthogonal in nature. And if the carriers are orthogonal in nature, it means that there will not be any interference. So what we can do, we can send the data through that single available bandwidth, and we can double the data rate without doubling the bandwidth, or we can say that we can increase the data rate without further increase in the bandwidth requirement. So this is the benefit of such kind of a scheme. And because the carrier 1 and carrier 2 are having 90-degree phase shift in between, so you can say that, for example, if we are using a sinusoidal wave for carrier 1, then for carrier 2, we can use a cosinusoidal wave, right? What we can do, because sine and cosine are 90-degree phase, right? So if, for example, if we do so, if we are using a carrier 1 and carrier 2, both are having 90-degree phase shift, then this type of arrangement can be known as quadrature modulation. Quadrature modulation. Quadrature modulation is a general concept, right? What it means, quadrature modulation means that we are using two carriers and both the carriers are orthogonal to each other, or in general they are having 90-degree phase shift, or if one carrier is sine wave, then the other carrier will be cosine wave, right? So if we are doing so, it means that we are doing quadrature modulations, right? And with the help of quadrature modulation, you can increase the data rate without the increment in the bandwidth. This is the concept. Okay. Now, if we say that cosine component, that if we are using two waves, one is cosine wave and the second one is sinusoidal wave. So in generally quadrature modulation scheme, what we say that cosine wave carrier is known as in phase component. क्या बोलते हैं इसको? In phase component. And the sinusoidal wave carrier is named as quadrature component. Quadrature component, right? So it means that one carrier will be named as in phase component and the second carrier will be named as quadrature component, right? So this is the quadrature modulation, right? This is the quadrature modulation. But if we add amplitude to this definition, what I mean to say, that if
different amplitudes, you can write it down even, if different amplitudes are possible, right? If different amplitudes are possible or are used with the two phase shifted carrier, with two phase shifted carriers, then we can say, or this technique can be named as, this scheme in fact can be named as quadrature amplitude modulation, right? Quadrature amplitude modulation. So if what it means that if we are using two carriers, both the carriers are orthogonal in nature and the amplitude of the pulses can vary, right, with respect to our information signal, then such kind of a scheme can be named as quadrature amplitude modulation. And if and if sorry and if m levels amplitudes are possible, if m level amplitudes are used, then the same QAM can be named as Emery QAM, right? So QAM के अंदर दो कैरियर होंगे और अगर जो एम्पलीट्यूड आप यूज कर रहे हैं वो बाइनरी में चेंज हो रहा है तो बाइनरी QAM होगा, अगर वो बाइनरी से ज्यादा लेवल ले रहा है तो हम लोग उसको एमरी QAM कह सकते हैं. ये चीज हम लोग ऑलरेडी what is the meaning of एमरी QAM we have already seen in the previous classes, right? So this was the simple introduction of Emery QAM, that is named as Emery quadrature amplitude modulation. Now we can simply represent the QAM signal like, if we represent any QAM signal mathematically, I hope आपने लिख लिया होगा ये सब. So if we represent the Emery QAM mathematically, then what we can write down? For example, we are having a signal xt. This is a Emery QAM signal xt. Then it can be represented as A1 P1T plus A2 P2T. We know that we should have two carriers, so P1T and P2T are suggesting here two carriers, and A1 and A2 are the amplitudes which will be varying according to the input signal, right? So if you can see this signal xt, right, it can be written as A1 P1T plus A2 P2T. And if you remember the PAM signal, right, in the PAM signal, for example, YT is a PAM signal. What we have written here, we have written A times of PT, right? YT can be written as A times of PT if it is a PAM signal. And we have already said that PAM signal was always will be always a real signal, right? Because here we are having only one carrier and one amplitude, and this A can take different values, right? So if A can take M values, then it can be named as Emery PAM. But if we talk about QAM, we need two carriers. So at the place of PT, I have written P1T and P2T. We are having two carriers, and definitely with both the carriers, we were having two amplitudes, and these two amplitudes can take M values. So that's why this particular signal can be named as Emery QAM signal, right? This is Emery QAM signal. One more thing we can conclude here,
that the Emery-Quam signal can be read as the combination of two PAM signals, right? Because if you see it, if you see it, it can be a first PAM, it can be a second PAM signal. Then with the use of these two PAM symbols, you can write down one QAM symbol, right? So with the use of, why I'm saying it, because whenever we do receiver analysis, then this concept will play a very important role, that the combination of two PAM symbol can generate one QAM symbol. Because what we do, we know that we have done all the analysis of PAM or Emery PAM. So with the help of that concept, we can use all the results of pulse amplitude modulation, because QAM can be written as a combination of the PAM symbols, or more strictly, it can be written as the combination of two PAM signals. So with the combination of two PAM symbols, one QAM symbol can be written, right? Can be written, right? ओके, संजना ने पूछा था डेटा कैरियर वाली लाइन, और आयुष ने पूछा था सर प्लीज एक्सप्लेन द बेनिफिट वंस अगेन. सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि, अच्छा सी क्लियर हो गया, ओके वेरी गुड संजना. और बेनिफिट इज वेरी सिंपल, दैट if you are using QAM, then your data rate will be double, so speed will be double, right, with respect to PAM, or with respect to any other scheme which is using a single carrier. बिकॉज यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप एक डेटा के लिए एक कैरियर यूज कर रहे हो, और वही आप कर सकते हो किसी भी मॉड्यूलेशन स्कीम में. लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि एक डेटा के लिए एक कैरियर यूज किया, और फिर दूसरे डेटा के लिए दूसरा कैरियर यूज किया, और दोनों कैरियर को बोल दिया कि ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं. अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो ये एक ही चैनल में चल सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी इंटरफेरेंस. सो अब आप एक साथ दो डेटा लेकर जा रहे हो, पहले आप केवल एक डेटा लेकर जा रहे थे उसी चैनल के अंदर, राइट. सो इससे क्या हुआ, इससे आपकी स्पीड डबल हो गई, ठीक है. इससे आपकी स्पीड डबल हो गई और स्पीड इंक्रीज हो गई, और आपने कोई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट रेज नहीं की, है ना. सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि विदाउट रिक्वायरिंग और नीडिंग एक्स्ट्रा बैंडविड्थ. बिकॉज अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बैंडविड्थ दे दूं तो फिर तो स्पीड बढ़ाना आसान है, बिकॉज आपके पास बैंडविड्थ ज्यादा होगा, आप उतना ही ज्यादा डेटा उस चैनल के अंदर डाल पाओगे, और जितना ज्यादा डेटा पैरेलली चैनल के अंदर मूव कर सकता है, वो उतना ही ज्यादा स्पीड आपके उस कम्युनिकेशन सिस्टम की होगी. सो QAM can be beneficial. Why? Because it can use, it can increase the speed of the communication, but without requiring any extra bandwidth. Right? This is the benefit. So now mathematically we can write down two PAM symbols, and if we add these two PAM symbols, we can write down one QAM symbol, right? So this is a very important point, and importantly, your carrier P1T, this is a pulse. It can be taken as root 2 by T cos of 2 pi FCT, and similarly P2T, it should be the 90 degree shifted version of this P1T. So we can use under root 2 by T sine of 2 pi FCT. Why we are taking these two signals? Because both these signals are having unit energy, right? Both these signals are having unit energy. So it will help whenever we do receiver analysis. At present, I am taking these signals, but practically you can choose any pulse shape. We know that we have already studied two carriers, and if we choose these two carriers, then what is the advantage? That the energy of these pulses unity. So in the calculation part, we put EP at the place of EP, we'll put simply 1. So the calculation will be easy for us, right? So P1 and P2T can be these two pulses, and A1 and A2, we know that it can take any amplitude value. So these A1 and A2, because
this is MRE QAM, so A1 and A2 can take M values. Now, the important thing is what? Important thing is what? That रिपीट कर दीजिए सर, P1 और P2 ये के लिए। P1 और P2 ये दो कैरियर हैं जो मैंने यहाँ चूज किए हुए हैं, और इन ये दोनों कैरियर चूज करने के पीछे सिर्फ एक बेनिफिट है, वो ये है कि इन दोनों पल्सेस की एनर्जी यूनिटी आएगी, क्योंकि ये साइनोसोडल कोर्स साइनोसोडल सिग्नल है। ओवर अ टाइम पीरियड इनकी एनर्जी क्या रहेगी? हमेशा यूनिटी रहेगी। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। सो फायदा ये है कि जब आप कभी भी कैलकुलेशन करोगे, रिसीव्ड सिग्नल को लिखोगे आप, तो उसमें एक टर्म आएगा हमेशा ईपी, एनर्जी ऑफ पल्स। सो उस एनर्जी ऑफ पल्स को हम लोग यूनिटी ले लेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अदरवाइज वो ईपी वेरिएबल हमारे साथ चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। और ईपी चूंकि हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसलिए हमें उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी पल्स चुनोगे, हर पल्स की अपनी एक कांस्टेंट एनर्जी होगी जो चलेगी सिग्नल के साथ। यहाँ उस एनर्जी को हमने यूनिटी अज्यूम कर लिया है, ठीक है। ओके, यस सर। ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, सी बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको, इफ वी टॉक अबाउट एमरी पैम, sorry, एमरी क्वैम, then what it means? It is a combination of two PAM symbol, but two एमरी PAM symbol का combination नहीं है ये ध्यान देने वाली बात है। If we talk about एमरी क्वैम, it is a combination of root एमरी PAM symbol, right? Root एमरी PAM symbol. So if we want to make एमरी QAM symbol, we have to take two root एमरी PAM symbols, right? For example, if we want to use 64 QAM, right? Sorry, 64 QAM. It means that we want to use 64 Airy quadrature amplitude modulated symbol. So it means what type of two PAM symbols we need? We need two 8 Airy PAM symbols, right? Two 8 Airy PAM symbols, right? और टू 8 Airy PAM symbol का मतलब डेटा कितने बिट का होगा? 2 to the power 3। सो डेटा के बिट कितने होंगे? 3 बिट, यानी कि 2-3 बिट के अगर मैं पैम लेता हूं तो उनकी हेल्प से मैं एक 64 QAM बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? 64 QAM सिंबल बना सकता हूं, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट that for generating एमरी QAM symbol we need to root एमरी PAM symbol, to root एमरी PAM symbols, right? It means that two emery PAM symbols cannot generate one emery QAM symbol. Two root emery PAM symbol will generate one emery QAM symbol, right? So you can also write it like total number of symbols in QAM will be m. So it means that it will be root m multiplied by root m is equal to m, right? So 2 8 Airy PAM, 8 Airy PAM, right? So 8 multiplied by 8 will give you 64, right? So 8 to 8 Airy PAM symbol can generate 64 Airy QAM symbol. Two 64 Airy PAM symbols cannot generate 64 Airy QAM. ये उससे बड़ा QAM generate करेंगे. So 8 Airy PAM 64 QAM generate कर सकता है. इसको generalize कर ले अगर, so एमरी PAM symbol generate करने के लिए we need to root एमरी PAM symbols. ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, right? Now we can also see in fact we have already derived the average energy of PAM symbol. So we'll use that simple formula here because we have to write down the average energy for QAM symbol also. So average energy for QAM symbol, write down, it can be written as, if we talk about for emery PAM symbol, we know that it can be written as, the energy can be, emery PAM symbol, the energy can be a square by 3 in bracket m square minus 1. Perhaps we have calculated this formula.
है ना, MRE/PAM is equal to A square by 3 M square minus 1, right? Now, if you want to calculate the average energy of MRE/QAM symbol, so MRE/QAM symbol can be generated with the help of root MRE/PAM symbol. So if we talk about this is a root MRE/PAM symbol, then it will be a single symbol, right? Actually, this energy will be ES by 2 because we are having two MRE/PAM symbol. Two MRE/PAM symbol can generate one MRE/QAM symbol. So if we writing out the energy of one root MRE/PAM symbol, it means that it is the half energy, ES by 2. I am writing ES by 2. So what I will do at the place of M, I will simply put root M. So the energy can be written as A square by 3 root M square minus 1, right? Root M square minus 1. This can be the simple energy of half. This is the half energy of uh, MRE/QAM symbol. So the average energy of MRE/QAM symbol, क्या होगा? It will be ES, average energy of MRE/QAM symbol, it will be ES. So ES will equal to twice of A square by 3 because this 2 will get multiplied from here to here, twice of 3 under root M square minus 1. This is the average energy of MRE/QAM symbol. So to solve all the mathematics of quadrature amplitude modulation, what basically we are doing, we are simply using all the relationship of pulse amplitude modulation, MRE/PAM, right? So we are using MRE/PAM relationship to solve the relationship of quadrature amplitude modulation. So this is the benefit that quadrature amplitude modulation can be written as with the help of pulse amplitude modulated symbol. So because it is so, that's why we can use all the relationship of pulse amplitude modulation to solve the calculation of QAM, that is quadrature amplitude modulation. Now, if we simply draw a block diagram of quadrature amplitude modulations, we can write down the heading. What will be the block diagram of quadrature amplitude modulation, QAM? So you can simply draw that block diagram. For example, there will be a first block, then we are having a phase shifter, then we are having a second block. So for example, this is the first symbol, that is M1T, then this will be a second symbol, that is M2T. So this is M1T, this is M2T, this is first product modulator. So I'm writing here PM. PM stands for product modulator. So actually we know that we have to multiply the master signal with the carrier to get modulation. And then here we are having, this is the block of phase shifter. I'm writing here PS. PS. So here PS stands for 90-degree phase shifter. 90-degree phase shifter. Right? So at this place, we will multiply the signal with the help of, for example, AC cos of 2 pi FCT. This is our first carrier number 1. So this signal will get multiplied by M1T, and then this will come out as the output, the first modulated symbol, right? And then here we have a put addition. Then this PS will go this side as well as go into the phase shifter. So the output here, it will become AC sine of 2 pi FCT, right? Again, here you are having a product modulator, that is PM. So this M2T will get multiplied by AC sine 2 pi FCT. Now at this place, what we will do, we will add these two symbols.
to get a quadrature amplitude modulated symbol. So at the output you will get a quadrature amplitude modulated symbol. Which line beta? This line, block diagram of QM, or this one, ES by 2 wali? Okay, okay. So actually we want to calculate the average energy of QAM, right? So मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ, average energy of QAM. तो वो मुझे लिखना है. अब QAM क्या है? QAM जो है वो 2 PAM symbol है ना? QAM is basically 2 PAM symbol, right? 2 PAM symbol. मैं क्या करूँगा, अगर मैं बोलता हूँ इस QAM सिग्नल की एनर्जी को मैं बोलता हूँ ES, it is a symbol energy. It means that it is a summation of 2 PAM symbols, so ES by 2 plus ES by 2, then only we will get ES, right? So हम लोग क्या करेंगे, 2 PAM सिंबल की एनर्जी को सम कर रहे हैं तो मुझे टोटल एनर्जी मिल रही ES. तो मैंने कहा क्या कि PAM की जो एवरेज एनर्जी है वो कितनी है? ओके, इसको सुनो ध्यान से. ES by 2, ES by 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगी क्वाम की एनर्जी, जिसको मैं सिंपल ES बोल रहा हूँ. ES इज अ जनरल नोटेशन फॉर सिंबल एनर्जी, राइट? तो इसका मतलब एक पैम के सिंबल की एनर्जी अगर मैं लिखता हूँ तो वो ES by 2 होगी. वो टोटल पैम की एनर्जी नहीं, टोटल क्वाम की एनर्जी नहीं होगी, वो केवल पैम की एनर्जी होगी, और पैम की एनर्जी है वो ES by 2 है, राइट? सो पैम की एनर्जी मैंने एमरी पैम की एनर्जी को लिख लिया, जो कि ये होता है फॉर्मूला, राइट? नाउ मैं एमरी पैम, मैं जानता हूँ क्वाम सिंबल में एमरी पैम नहीं लगता है, रूट एमरी पैम होता है. सो रूट एमरी पैम के लिए मुझे क्या करना है, एम की जगह रूट एम लिखना है. सो मैंने एम की जगह क्या कर दिया, रूट एम लिख दिया. अब ये जो एनर्जी का फॉर्मूला बना है, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली ऑफ द फॉर्मूला ऑफ ES by 2. बस 5-10 मिनट, अभी अभी मेल कर रहा हूँ. और मैंने ना उन दोनों से बात करी है, ये जो ओके. सो ES by 2 plus ES by 2 will give you ES. तो मैंने क्या किया, जो पैम की एनर्जी लिखी है वो बेसिकली मैंने ES by 2 लिखी है, और ES by 2 रूट एमरी पैम की एनर्जी होगी. तो रूट एमरी पैम में क्या गया, जो एमरी पैम की एनर्जी थी उसमें एम की जगह रूट एम लिख दिया, तो वो रूट एमरी पैम की एनर्जी बन गई. सो ES by 2 रूट एमरी पैम की एनर्जी है, जो कि a स्क्वायर by 3 ब्रैकेट रूट एम स्क्वायर माइनस 1 है. अब अगर मैं बात करूं कि मुझे टोटल एनर्जी ES चाहिए, तो मुझे क्या करना है, या तो मैं दो एनर्जी को जोड़ देता हूँ ES by 2 ES by 2, तो भी एक बात है, या फिर इस 2 से सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो ES निकल आएगा. तो दिस इज ES इज अ एनर्जी ऑफ QAM सिंबल, राइट? ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया है. ठीक है बेटा? सर यहाँ पे जो ए है वो क्या है, कैपिटल ए स्पेसिंग कह लो दो पैम सिंबल की, जिसको शायद हम लोग D/2 लिखा करते थे, अगर आपको याद हो शायद. यस सर, यस सर. वो कुछ नहीं है, मैंने शायद ए के टर्म में भी फॉर्मूला बताया था आप लोगों को. सर जैसे कि आपने फॉर्मूला बताया था तो उसमें तो d स्क्वायर बाई 12 m स्क्वायर माइनस 1 था, तो बाद में d की जगह 2a रखवाया था आपने, तो उसमें हाँ, तो सर हाँ. 2a तो कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगा ना, तो 2a कांस्टेंट कैसे हो गया? ए हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अगर एक बार आपने सिंबल फिक्स कर दिया, भाई अगर मैं कॉन्स्टलेशन डायग्राम पैम का देखूं, ठीक है, पैम की बात करता हूं मैं, पैम का कॉन्स्टलेशन डायग्राम मैंने क्या समझाया था आपको, बीच में 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास a प्लस a और माइनस a हो सकते हैं, यहाँ पर आपके पास 2a और माइनस 2a हो सकते हैं. तो गैप 2a इज फिक्स्ड. लेकिन अगर पैम की बात करो तो पल्स कौन कौन से एम्पलीट्यूड ले सकती है, पल्स a हो सकता है,
पल्स 3A हो सकता है, पल्स 5A हो सकता है। तो यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हो रहे हैं। सेम QAM के अंदर होगा, कोई पल्स A एम्पलीट्यूड रख सकती है, कोई पल्स 2A एम्पलीट्यूड रख सकती है, कोई पल्स 5A एम्पलीट्यूड रख सकती है। ऐसे करते करते मैं M लेवल तक जा सकता हूँ। दैट्स व्हाई दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एमरी पैम। सो जो एमरी पैम का कांसेप्ट है, द सेम कांसेप्ट इज वैलिड इन क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट। बस वहां M की जगह रूट M कर देना है बस, ठीक है। ओके सर। Now we have find out the transmitted block diagram of QAM, right? So now at the side of this can be a transmitter block, this can be a transmitter block. Now if we want to see a receiver block, then what we can do, we can use this QAM symbol as an input of a receiver. So receiver कैसे यूज करेगा इसको, receiver ऐसे यूज करेगा कि QAM symbol जो है वो दोनों रिसीवर के पास जाएगा। यहाँ पे बेसिकली एक रिसीवर के पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होगा, एक दूसरा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होगा, राइट। अगेन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फेज शिफ्टर लगाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा PS, ऊपर वाले को मैं क्या दे दूंगा, cos 2π FCT, नीचे वाला क्या हो जाएगा अपने आप sin 2π FCT। AC रहेगा दोनों जगह, AC रहेगा, राइट। तो ये दोनों प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों QAM सिंबल्स यहाँ पर अलग अलग डिमॉड्यूलेट होके आ जाएंगे। इनको आप लो पास फिल्टर से और पास करा सकते हो, लो पास फिल्टर से और पास करा देते हैं इनको। So we can use here low pass filter, then this will be your final output. So this can be the receiver block diagram of QAM, right? So the concept is very simple. Just like in amplitude modulation, we were using balanced modulator circuit. So same circuit is here, where you are using a product modulator. So कोई भी साइनोसॉइडल कोई भी QAM सिंबल आएगा, उसको आप cos से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन फेज कॉम्पोनेंट डिकोड होके आ जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेचर फेज कॉम्पोनेंट डिकोड होके आ जाएगा। सो आप ये कह सकते हो कि जो ट्रांसमिटेड सिंबल लिखा था XT, वो हमने लिखा था A1 P1T प्लस A2 P2T, राइट, ये लिखा था। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं ये कह रहा हूँ, इसको हम लोग अलग अलग डिकोड कर रहे हैं। A1 वाले पार्ट को डिकोड करके लाएंगे तो A1 निकलेगा, A2 वाले पार्ट को डिकोड करके लाएंगे तो A2 निकलेगा। सो X2 का जो डिकोडिंग है, यानी QAM सिंबल की डिकोडिंग है, वो इस तरीके से होगी, राइट। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर M1T लेकर पहला इन फेज कॉम्पोनेंट जनरेट किया, फिर क्वाड्रेचर कॉम्पोनेंट जनरेट किया, दोनों को सम किया तो ये वाली वेव फॉर्म मुझे मिल गई, राइट। इसके बाद मैंने ये पूरी वेव फॉर्म उठा के इसके इनपुट में डाल दी। ये दोनों, ये पूरी वेव फॉर्म ऊपर भी जाएगी, ये पूरी वेव फॉर्म नीचे भी आएगी, बट केवल एक A2 P2T वाला, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉस, एक यहाँ पर ये वाला मान लीजिए कॉस है और ये वाला मान लीजिए साइन है, राइट। तो ऑर्थोगोनल है तो कॉस और साइन का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा इस XT से तो कॉस वाला कॉम्पोनेंट तो बचेगा, लेकिन कॉस साइन वाला 0 हो जाएगा, राइट। तो केवल ये वाला हिस्सा आगे लो पास फिल्टर में जाएगा तो कॉस वाला टर्म हटके केवल A1 डिकोड होके आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस पूरे वेव फॉर्म को यहाँ पे इनपुट करता हूँ तो साइन वाले कंपोनेंट तो बचेंगे, साइन कॉस वाले 0 हो जाएंगे, क्योंकि इनके इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे क्योंकि ऑर्थोगोनल है। तो ये A1 वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, A2 साइन स्क्वायर वाला टर्म बाहर आएगा, साइन स्क्वायर वाले टर्म को अपन फिल्टर कर देंगे, फ्रीक्वेंसी का टर्म में A2 यहाँ पर एज आउटपुट बाहर मिल जाएगा। सो दिस विद दिस मैकेनिज्म यू कैन डिकोड क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड सिंबल, राइट। एंड the generation and the reception both is here as a block diagram of quadrature amplitude technique, right. In the next lecture what we'll do, we'll try to see the mathematics of the receiver of the QAM symbol, right, how we are doing it mathematically. So वो हम लोग next lecture में देखेंगे। So अगर आज को हम
समराइज करें कि आज हमने क्या पढ़ा. सो वी हैव स्टार्टेड विद क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट. और क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने ये देखा कि इट कैन बी कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैम सिंबल. और अगर मैं एमरी क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहा हूँ तो फिर ये टू रूट एमरी पैम सिंबल के कॉम्बिनेशन से बनेगा. ये ध्यान रखने वाली बात है, राइट. फिर हमने एवरेज एनर्जी लिख ली और कॉन्सेप्ट में हमने पैम की एनर्जी को यूज करते हुए पैम की एनर्जी लिख ली. फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्यूएम हमने देख लिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, द मैथमेटिक्स ऑफ रिसीवर ऑफ कोएम, राइट.